क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ये तीन पार्टनर्स हैं 541 शिरीष यानी कि 5/10 शेयर ही डाइड 30 जून 2018 को, विच मीन्स ही विल टेक द प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून का वो प्रॉफिट लेके जाएगा। देन यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 17-18 का एंड ये 16-17 का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, राइट। ये लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट है। ओके, लेट्स कैलकुलेट द शिरीष कैपिटल अकाउंट। So Shirish's capital account particulars. This is on the debit side. This is rupees. This is particulars. This is rupees. So let's start with balance brought down. Shirish ka balance brought down is how much? 1 lakh rupees. So it is by balance brought down 1 lakh rupees. Then what else? By let's calculate the goodwill. सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सो प्रॉफिट है ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। सो एक साल ये और एक साल ये दोनों का प्रॉफिट एवरेज करना है हमें। सो एवरेज करके कितना बन रहा है? इट इज फर्स्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन। सो 80,000 प्लस 60,000 by 2, so which is 1,40,000 by 2, which is 70,000 rupees। यहाँ तक क्लियर हो गया। शिरीष का शेयर 70,000 इंटू 5/10, 5 और 9 10, 5/10 इंटू 3/12। his date of death is Shri's date of death is 30th June, so 3/12। the value comes out to be 70,000 into 5 divided by 10 into 3 divided by 12, 8750। ओके। सेकेंडली उसका गुडविल भी बोला हुआ है। गुडविल फॉर्म वैल्यू है 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। सो लास्ट 2 ईयर्स की एवरेज क्या आई है? 70,000। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट टू बी 70,000 रुपीज। देन गुडविल is 70,000 rupees into 2 years purchase, which is 1,40,000। 2 years purchase, it is 1,40,000 rupees। Now for Shirish share would be 1,40,000 into 5/10, which is 14,570। sorry, calculation has gone wrong for the first time। into 5 divided by 10, 70,000 rupees। it has to be divided in the gaining ratio। the other two partners have gained in the ratio of 4:1, and the names of Harit and Asha, the other two partners are Harit Asha's contribution to the goodwill 70,000, sorry, 70,000 into multiplied by 70,000 multiplied by Harit's share, which is 4/5, and 70,000 multiplied by 1/5, which is Asha's share, divided by 5 into 4, 56,000 rupees Harit देगा and 14,000 rupees ये आशा देगी। So
बाय, सबसे पहले हमने पी एंड एल निकाला, सो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, द वैल्यू वॉज 8750, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 8750 बाय हरित's कैपिटल अकाउंट। हरित के कैपिटल अकाउंट में कितनी वैल्यू आई है? 56,000 एंड आशा का 14,000। हरित's कैपिटल अकाउंट 56,000 बाय आशा's कैपिटल अकाउंट 14,000. Is there anything left here? P&L for the present year by P&L account. So it was 80,000 into 5 by 10. 5 by 10 is his share. So into 5 by 10, 40,000 रुपया ये मिलेगा उसको. That's the total amount that this person is going to receive. So the total becomes 1 lakh plus 8750 plus 56,000 plus 14,000 plus 40,000, 2,18,750. This is the amount which is paid to the Shirish executor account. Right? This is the amount that is to be paid to the executors of Shirish. So this finishes the question. Okay? Right guys? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, do let me know. Let's solve the another one. 29. So next question is question number 29. A, B were partners in a firm. A died on 31st March 2018 and the balance of the firm on that date was this. On A's death, it was found that patents were valueless. Furniture was to be brought down to 24,000. Plant was to be reduced by 10,000. There was a liability of 7,000 on a workman compensation. Previous journal entries for the above at the time of A's death. Okay. So we have to prepare the journal entries. But usse pehle let me prepare the revaluation account. ठीक है, आई हैव टू प्रिपेयर इट एज अ वर्किंग नोट बिकॉज जितना मैं वर्किंग नोट में डालूंगा पर्टिकुलर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, सो मेरे को जनरल एंट्रीज बनाने को बोला है, लेकिन जब तक मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा मेरी जनरल एंट्रीज प्रॉपर नहीं बनेंगी. सो राइट, सो रिमेंबर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड and decrease in asset is debited, increase in liability is debit, decrease in liability is credited. Okay, so they are talking about was found that patents were valueless. Furniture was to brought down to 24,000 and plant is reduced by 10,000. तो straight ही आ गया, इसमें तो account बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. So वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना, सो इट विल बी पेटेंट्स अकाउंट डेबिट. ये सब फॉर्मेट में बनाना है, प्लीज रिमेंबर ऑल द टाइम. ओके, लेट मी मेक द फॉर्मेट फॉर ऑल ऑफ यू. पेटेंट्स so these are the date, the particulars, remember the format, the ledger folio, then rupees in debit and rupees with credit. Okay, so it says patents are valueless. Furniture भी brought down हुआ है. Patents account debit, furniture account debit, plant account debit,
रिड्यूस बाय 10,000 है ना. सो पेटेंट्स की वैल्यू वॉज 8,000. फर्नीचर वॉज ब्रॉट डाउन टू 24,000, 6,000 से रिड्यूस हुआ है. एंड प्लांट रिड्यूस्ड बाय 10,000, सो 10,000 से रिड्यूस हुआ है 10,000. सो द वैल्यू बिकम्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 10 6 16, 16 और 8 24,000. ओके, यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे. बीइंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस्ड. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ओवर. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. इन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इट्स नेक्स्ट let's distribute the general reserve. General reserve is 9,000. So what would be the general entry? General reserve कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्रेडिट साइड पे आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है. इसका मतलब जनरल एंट्री में वो डेबिट साइड पे आएगा. सो हम क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर्स का नाम, साधु राजा करण. साधु's कैपिटल अकाउंट, राजा's कैपिटल अकाउंट टू करण's कैपिटल अकाउंट. साधु, राजा एंड करण. सो तीनों का कैपिटल अकाउंट आ गया. व्हाट इज देयर रेशियो? देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल. सी, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी है, इसका मतलब हम इक्वल डिवाइड करेंगे. सो जनरल रिजर्व्स वर 9,000, इक्वल मतलब 3,000 3,000 3,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट. सो यहां पे आ जाएगा बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं जनरल रिजर्व फॉर द इंफॉर्मेशन. ओके, अब क्या रह गया? सिर्फ एक ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रह गया. वर्कमैन पी एंड एल अकाउंट भी है. पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे 6,000, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम. सो पी एंड एल अकाउंट की जनरल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू साधु's कैपिटल अकाउंट टू राजन्स कैपिटल अकाउंट टू करण's कैपिटल अकाउंट, राइट. साधु, राजन, करण. पी एंड एल 6,000 है, सो इट वुड बी 2,000 2,000 2,000. 6,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में आ जाएगा. तीनों पार्टनर्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बीइंग पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, राइट. नेक्स्ट सेम फॉर्मेट को हम कंटिन्यू करते हैं. राइट, अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन की एंट्री रह गई है. सी, हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है कितना? सो दी वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट. वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हमारे पास 7,000 आया हुआ है, 10,000 हमारे पास अकाउंट में है, राइट. 3,000 तीनों कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. टू साधु's कैपिटल अकाउंट, टू राजन्स कैपिटल अकाउंट, टू करण's कैपिटल अकाउंट. बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन transfer to partner capital after required adjustment. ठीक है, 10,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन है हमारे पास. सो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट है 7,000 की. सो बाकी तीनों पार्टनर्स को 1,000 1,000 और 1,000 तीनों पार्टनर्स को चला जाएगा. दिस इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन की एंट्री. आई थिंक लास्ट में 2 एंट्रीज रह गई हैं. एक तो रिवैल्यूएशन का लॉस,
सो रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री क्या होगी, क्योंकि सारा का सारा एसेट जो है वो डेबिट साइड पे आया है, विच मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो पेटेंट्स फर्नीचर एंड प्लांट, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे ना, सो टू पेटेंट्स अकाउंट डिक्रीज इन एसेट है ना, टू फर्नीचर अकाउंट एंड टू प्लांट अकाउंट 8 6 10, टू प्लांट अकाउंट 8,000 6,000 and 10,000 by loss to partner capital account. So three partners, loss would be distributed 24,000 है तो वही 8 8 8. So the names of the partners are Sadhu, Raja and Karan. यहाँ मैंने राजन लिख दिया, so it is Raja actually. Okay. To Sadhu's capital account, to Raja's capital account and to Karan's capital account, being loss transferred to capital account of partners. 24,000 का लॉस था, 8,000 8,000 8,000 तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया. सो साधु, राजन एंड करण 8,000 8,000 एंड 8,000, 24,000 का टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर. एक लास्ट एंट्री हमारी रह गई है, विच इज जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर हो जाएगा. सो कितना बैलेंस बचता है कैपिटल अकाउंट का, 2,000 3,000 3 6 और 8 14 और -8 6,000 और 40,000 वो है ऊपर जो कैपिटल अकाउंट में है. एंड okay, let's total it only, then we can calculate it properly. Okay, so partners capital account. अब इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होगी ए साधु's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. वैल्यू हम इसमें देख लेते हैं कितनी हुई. सो वैल्यू बिकम्स साधु's कैपिटल अकाउंट वुड बी द बैलेंस विच इज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ साधु. सबसे पहले वी हैव 8,000. ओके, दिस इज अ लॉस, सो ये सब्ट्रैक्ट होगा. सो 8,000 इन माइनस, देन ऐड करेंगे हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन का 1,000 प्लस 2,000 ऑफ पी एंड एल विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस 3,000 ऑफ जनरल रिजर्व. 3 2 5 और 1 6,000, 3,000 2,000 1,000 प्लस उसका 40,000 का कैपिटल है. सो 38,000 इज द अमाउंट विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड. सो इट इज 38,000 एंड 38,000 बीइंग फाइनल अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स executor. Right, this finishes the question. Thank you. The next question is X and Y are partners. The partnership deed provided inter alia, which means that the accounts be balanced on 31st March every year. Profits be divided as 1/2 for X, Y 1/3 and carried to reserve 1/6. So 1/2, 1/3 and 1/6 is carried to reserves. In the event of death of the partner, उसका the executor is entitled to be paid capital जो होगी and proportion of the profits till the date of death on the average profits of the last 3 completed years. By way of goodwill उसका total profits for the 3 preceding years ये है. Why 1st August 2023 को डेथ हुई है उसकी. So financial year 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, which means he is alive for how many years, for how many months,
सो इट वुड बी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 1 अगस्त को डेथ हुई है, सो ही इज लाइफ फॉर 4 मंथ्स, सो ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ 4/12, सो प्रॉफिट वगैरह 4/12 की बेस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन. सो लेट्स प्रिपेयर द पार्टनर्स capital account. So Y has died. So let's prepare the Y's capital account. The capital account for Y would be it is debit, credit, rupees, particulars, rupees, particulars. So सबसे पहले हम कैसे शुरू करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट. सो वाइज कैपिटल अकाउंट कितना पैसा पड़ा है? 6,000 रुपया. लेट्स डिस्ट्रीब्यूट 6,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट. देन नेक्स्ट इज अकाउंट्स 31 मार्च को बैलेंस होंगे. प्रॉफिट्स 1/1 हाफ 1/2 एंड 1/3 में डिवाइड होगा. फिर रिजर्व्स 1/6 में जाएगा. सबसे पहले हम उसके बाद रिजर्व्स ट्रांसफर करते हैं बाय रिजर्व्स अकाउंट. सो रिजर्व्स कितने हैं? 3,000 के. व्हाट इज द शेयर ऑफ दिस पार्टनर? लेट्स कैलकुलेट द शेयर फर्स्ट. सो उसने बोला 1/2 रेशियो 1/3. सो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. 3 2 6. सो 3/2. सो ओल्ड शेयर उनका 3/2 है. सो 3 फॉर एक्स एंड 2 फॉर वाई. 2/5. 3,000 into 2/5 since y has died. So 3,000 divided by 5 into 2. It would be 1,200 rupees. Then आ गया उसका प्रॉफिट का शेयर. एंड एक और हमने निकालना है विच इज शेयर ऑफ गुडविल. So let's see what they say about the profit. Profits be divided as 1/2, 1/3 and carried to reserve is 1/6. Okay, so the profits, goodwill, by way of goodwill is proportional to total profits for the 3 preceding years, proportion to total profits का हिस्सा उसका पिछले 3 साल का. Okay, so profit, what is the profit? The profit is 4,200, 3,900 and 4,500 total profits. 4,200, 3,900 plus 4,500 divided by 3. So this turns out to be 4,200 plus 3,900 plus 4,500 divided by 3 is 4,200. 4,200 rupees is the share of Y's share of profit. So into 2/5 इस साल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 2/5 इस बंदे का शेयर है इंटू 4 महीने. ही वॉज लाइफ फॉर 4 months, सो हिज शेयर इज 560 रुपीज. सो प्रॉफिट कितना आएगा? 500. ओके, गुडविल भी कर लेते हैं. उसने बोला था टोटल शेयर ऑफ गुडविल. So by way of goodwill, his proportion to the total profits for the 3 preceding years, 12,600 is the goodwill. Okay, so ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया ना. So it is 12,600 by 3. So his share of goodwill क्या निकलेगा? 12,600 and his share 2/5. So ये कितना बनता है? 12600 into 2 divided by 5, 5040 rupees. This is his share of goodwill. Okay, let's put all these values. So reserve आ गया हमारा 1,200 रुपया. Then goodwill लेके आएंगे by Axis capital account. So ये goodwill है. This is we just calculated 5040 by P&L suspense account. प्रॉफिट निकाला जो हमने 560 रुपीज. दैट्स इट.
to Y's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वाई के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा. सो इट इज 6,000 प्लस 1,200 इज 7,200 प्लस 5,040 is 1,2,240 plus 560, 12,800. 12,800 is the amount that is paid to Y's executors. The next question, question number 27. Trisha, Anisha, Rishika were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows. So Trisha died on 31st July 2022. So he survived for how many months? Since it is 31st March closure, so April, May, June and July, 4 months. So 4 by 12. So according to the partnership deed, the executors of the deceased partner were entitled to balance जो उसके partners capital account में है 15,000 per quarter की salary, which means for the year it is 15,000 into 4. Share of goodwill calculated on the basis of twice the average of past 3 years profit. Share of profit from the closure on the death. Okay. Trisha withdrew 20,000 on 1st May 2022 for her personal use. So drawings भी उसने की हैं, right? So let's make the Trisha's capital account. So Trisha's capital account. Trisha's capital account. It is particulars rupees, particulars rupees. So the same by balance brought down. By balance brought down is 3 lakh rupees. सबसे पहले हमने देनी है सैलरी एट द रेट 15,000 पर क्वार्टर. सो बाय सैलरी अकाउंट 60,000 हो गया. 15,000 per quarter into 4 is 60,000 rupees. Share of goodwill calculated on the basis of twice the average of past 3 years profit. So let's calculate the share of goodwill. Working notes में करते हैं. क्या लिखेंगे हम? वर्किंग नोट. फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ goodwill. They say last 3 years profit will calculate the basis of twice the average of past 3 years profit. पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 50,000. 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 3. 2 और 1 3 और 1 4. 4,50,000 by 3. 1,50,000 rupees. 1,50,000 rupees is the total share of goodwill, right? And जब हम इसको twice करेंगे, so it will be 1,50,000 into 2. 2 is the purchase price years. जो भी हमारे purchase price के years हैं. So total goodwill of the firm is 3 lakh rupees. Trisha share 3 lakh into what is Trisha's share? Trisha's share is 2 to 1. So 2/5. 2 by 5. 3 lakhs into 2 by 5. 5 6 are 30. 60 to 120. 1,20,000. 1,20,000 is her share of goodwill. Trisha's. So Anisha and Rishika will pay 2 by 3, 1 by 3. Anisha will pay 2 by 3 into 1,20,000, which is
80,000 rupees, and Anisha and Rishika will pay 1 by 3 into 1 lakh 20,000, which is 40,000 rupees. So let's mark the entry. एक बाय जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व इज 50,000. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 50,000 इंटू द त्रिशा शेयर इज 2/5, सो 20,000 रुपीज. Then by Anisha's Rishika, Anisha's capital account by Rishika's capital account. Anisha has to pay 80,000, Rishika has to pay 40,000. बस एक प्रॉफिट रह गया, रेस्ट एवरीथिंग टू ड्राइंग्स 20,000. This is the amount which has been withdrawn by her. So 20,000 rupees. ये लिखा ना, Trisha withdrew 20,000 for her personal use. Share of profit for the closure of the last accounting year till the date of death on the basis of last year's profit. Last year का profit कितना है? So let's calculate the profit. So second is profit. What would be the share of profit? The share of profit would be last year's profit. Last year's profit is 1,50,000 multiplied by Trisha's share. 533 to the 60,000 rupees. Right? This is the profit. But till the date of death. So it would be 60,000 into 4 months. Trisha died on 31st, right? So 4 by 12. 12 5 7 5 के 20,000 रुपया P&L suspense account. By P&L suspense account 20,000. Is there anything left? So it would be to Trisha's executor account. So let's total it now. And if our total is right, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा. So it is 3 lakhs plus 60,000 plus 20,000 plus 80,000 plus 40,000 plus 20,000. 5 lakh 20,000 minus 20,000. टोटल गलत कर दिया हमने. लेट्स चेक इट अगेन. ओ यस, वी हैव डन अ मिस्टेक हेयर. हमें यहाँ पे करेक्ट करना है. ये 4 months है. दिस इज 4 months. सो 15,000 फॉर 3 months, राइट? सो 4th month की सैलरी निकालनी है. सो इट वुड बी, लेट्स कैलकुलेट इट. थर्ड सैलरी, ठीक है. नाउ त्रिशा डाइड ऑन 31st July, which means she would be given the salary for 4 months. Now her salary for 3 months, 15,000 rupees. For 1 month 15,000 is for the quarter divided by 3, so 5,000 हम और ऐड कर देंगे. So her salary would be 15,000 plus 5,000, 20,000 rupees. So this salary would be 20,000 rupees. 3 lakh plus 20,000 plus 20,000 plus 80,000 plus 40,000 plus 20,000. This is 4,80,000. This is also 4,80,000, and this would be 4,60,000. So the executors will get 4,60,000. Right guys? यहाँ तक आपको अगर सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन.
इसी तरह आपको वर्किंग नोट बना के दिखाने हैं सारे क्वेश्चंस में, राइट? ओनली देन आपका क्वेश्चन राइट माना जाएगा फुल मार्क्स के लिए। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। करीम, सलीम, रहीम, तीन पार्टनर्स हैं। किस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 3:4:3 है। फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च हर साल। 1 अक्टूबर 2019 को करीम डाइड, 1 अक्टूबर 2019, सो विच मीन्स 31 मार्च को बुक्स बंद कर रहे हैं ना, सो 1 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। करीम सर्वाइव फॉर 6 मंथ्स। गुडविल ऑफ द फर्म 3,50,000 थी। करीम का शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ डेथ, इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ओके, तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट ये था। टोटल अमाउंट पेबल टू करीम्स एग्जीक्यूटिव्स ऑन डेथ वाज 7,35,000। इट वाज पेड ऑन 15th October 2019। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सो आपको सारा कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, सिर्फ एक गुडविल और प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है, राइट? सो लेट्स कैलकुलेट द गुडविल। यहां से करें। फर्स्ट, गुडविल। He says goodwill of the firm 3,50,000 है and Kareem is the first partner। 4, 3, 7, 3, 10, 3/10। Okay, so 3,50,000 into 3/10 is equal to 1,05,000 is Kareem's share. So how much would the others pay? The others are Salim and Rahim, 4/7, 3/7. Salim would pay and Rahim would pay 4/7, 3/7, 105,000, 1,05,000। ओके, सो 1,05,000 divided by 7 into 4, 60,000 and 45,000। ओके, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 60,000, 50,000 हो गया। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी 1,70,000, 1,30,000, 1,90,000, 1,10,000। ओके, लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,70,000, 1,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट बोला ना उसने 4, सो एवरेज प्रॉफिट कम्स आउट टू 1,50,000। ये एवरेज प्रॉफिट आया। अब करीम का शेयर कैसे आएगा? करीम का शेयर वुड बी 1,50,000 into 3/10 into 6 months. He survived for 6 months. 6/12. 1,50,000 into 3 divided by 10 into 6 divided by 12. 22,500 is his share of profit. That's it. यही दो चीज़ें हमें निकालनी थी. Let's make the necessary journal entries. Okay. Past necessary journal entries from the above transactions. Let's first make the journal. Date, particulars, ledger folio, debit in rupees, credit in rupees. So first entry will be the amount of goodwill. So the entry would be Salim's capital account debit. Who is the other one? Rahim.
Rahim's capital account debit to Kareem's capital account. 60,000, 45,000 and 1 lakh 5,000 being share of Kareem's goodwill adjusted. This is the first entry, right? 60,000, 45,000 की entry हो गई है. Next is profit की entry 22,500. So the entry would be P&L suspense account debit to Kareem's capital account. Being share of profit given. बाईस पाँच सौ बाईस पाँच सौ. So there was a last entry which has to mention the amount given to the executors, 7,35,000. So the amount is given to the executors. So क्या आएगा? Kareem's capital account debit to Kareem's executor account, 7,35,000, 7,35,000 being amount of Kareem's capital transferred to his executor's account. Okay, 7,35,000, 7,35,000. So this finishes question number 26. These were the three entries that we had to make in this, right? Okay, guys, if you have any issue in any of these questions, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Bye.